Hello guys, let's understand what are the way can be an evidence can be present in a court and what are their types of evidence given under the Indian laws. So hello guys, I am Karthik Hamdard in a team of Lexis and Company as an intern making this video to understand the two important evidence which can be presented before a court. One is the oral evidence and documentary evidence. So in this video I discuss about what are the various procedures of oral evidence, how are some oral evidence cannot be acceptable in a court, and what are the exceptions to such rules are given in the courts. So the evidence are basically governed by a specific legislation which was given under the Indian Evidence Act. So the Indian Evidence Acts provide a procedural way on how the evidence can be presented before a court, and there is a specific section which deals to this also. So the document which are presented in a court to supports any party's stance or supports its argument in a court is known as evidence. So evidence can be of oral and can be of documentary type. So the oral evidence can be said that all facts except those facts which are contained in a document or in electronic records are to be considered as oral evidence, which means कोई भी एविडेंस जो कि ना किसी डॉक्यूमेंट में दी हो ना किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, उसके अलावा किसी भी चीज़ में हो जो सपोर्ट करते हो किसी पार्टी को, वो कोर्ट में एज एन ओरल एविडेंस कैन बी कंसिडर्ड. सो सेक्शन 59 and section 60 of this act, the Indian Evidence Act, deals with the oral evidence. Section 59 clearly stated that the oral evidence in many cases can be read with section 59 put forward some of the cases which are to be considered as oral evidence, and section 69 puts a condition that whatever oral evidence is allowed in a court, it must be fulfill one condition, which is it should be direct in a court. So that we can say that the 59s provide what are the oral evidence and what can be considered in oral evidence, and 60 provide what such evidence should be direct in nature. So now we considered what are oral evidence and where it is defined. So the oral evidence is defined under section 9 of the Evidence Act, as it is stated that all statement which the court permitted or requires to be made before it by the witnesses in relation to the matter of fact under its inquiry. So we from this definition we understand what does evidence means. So oral evidence means कोई भी witness आके कोर्ट में कुछ प्रोवाइड करता है, फैक्ट्स प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू द मैटर एंड डिस्प्यूट्स, जिससे इंक्वायरी कोर्ट कर सके कि उससे कंक्लूजन निकाल सके कि हाँ ये पार्टी के सपोर्ट में और नहीं. तो उसको अपन ओरल एविडेंस कंसिडर कर सकते हैं. सो जो फैक्ट्स जो भी स्टेट करते हैं, ऑल द फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट और द डॉक्यूमेंट एविडेंस आर कंसिडर्ड इन सेक्शन 61 to 66 of this act. So now we can say is that the oral evidence can be said that the collection of purpose by showing the which connect to the purpose of dispute in this sense. So oral evidence 60 provides some of the condition that the oral evidence must be स्टेट टू बी डायरेक्ट इन नेचर, विच मीन्स कि अगर इसका मतलब क्या हो, 60 में वो 4 कंडीशन दी गई हैं कि इफ़ इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन. सो जो पर्सन उस फैक्ट को प्रोवाइड कर रहा है विटनेस, उसने वो फैक्ट्स क्लियरली मालूम हो उसको वो फैक्ट्स, तभी वो अपना ओरल एविडेंस दे सकता है. इफ़ इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी हियर्ड, अगर कोई विटनेस ने सुना है किसी चीज़ को तो वो उसने सुना हो, वो फिर जाके कोर्ट में दे रहा हो, ये नहीं कि उसने और थर्ड पार्टी से सुन के फिर वो बोल रहा है, उसको अपन बोलते हैं हियर से एविडेंस. वो आर नॉट कंसिडर्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तीसरी इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कैन नॉट बी प्रिसाइज बाय एनी अदर सेंस इन अदर मैनर. अगर कोई और पर्सन जो विटनेस है उसने किसी और सेंस के थ्रू ना हियर करा ना सीन करा, किसी और सेंस के थ्रू मालूम चल रहा हो, तो वो उसको मालूम होना चाहिए कि थर्ड पार्टी को नहीं करा. फोर्थ है इट इफ रिफर्स टू एन ओपिनियन और ग्राउंड ऑन विच हिज ओपिनियन मेड. इफ और कोई ओपिनियन देता है तो वो पर्सन का खुद का ओपिनियन होना चाहिए और ग्राउंड होना चाहिए कि इस ग्राउंड पे मैं ये ओपिनियन दे रहा हूँ कोर्ट में. सो ओपिनियन आर नॉट कंसिडर्ड एज एन वैलिड टेस्टामेंट और वैलिड ground as an evidence in the court. So the court does not rely much on those evidence in the court.
So rule, there is a specific rule against hearsay. Hearsay is not considered an evidence. Because it not hear directly evidence in under section 60 of this act. So it provides as oral evidence in all case. It should be in direct in nature. So rule of exclusion of hearsay. Why these rule? There is a specific rule to eliminate hearsay evidence. So in the next video I discuss about what are the basic exceptions to the rule of hearsay and why there is a reason for excluding this evidence from the court of law. Thank you for watching this video, and I hope you understand much more on the oral evidence in India.